कम है तो they will extract more oxygen. So आपकी जो venous oxygen saturation है that will drop. So basically it one line it indicates the oxygen it indicates oxygen demand and oxygen consumption of the tissues. क्योंकि टिश्यू के अंदर ब्लड आता है आर्टरी से और जाएगा वेन्स के अंदर. ओके, तो उनकी अगर मेटाबॉलिक ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है या सप्लाई कम है, इन दोनों केसेस में इट विल अफेक्ट योर वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन. तो सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन आइडियली सैचुरेशन इन द पल्मोनरी आर्टरी. उसके लिए आपको कैथेटर डालना पड़ेगा, स्वैन कॉज कैथेटर इन दी पल्मोनरी आर्टरी. तो वो जो कैथेटर है वो पहले राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल जाएगा और वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा. तो वहां से अगर आप सैंपल लेते हो दैट इज ए सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन. ओके, सो बट दिस इज टेक्निकली डिफिकल्ट. सो वी स्टैंडर्ड वी यूज इट इन द ओपनिंग ऑफ द in the vena cava, क्योंकि हम एक through a peripheral vein we go up to the superior vena cava at the entry of the into the right atrium. तो right atrium के एंट्री पे हम वेना केवा से सैंपल लेते हैं. दैट इज नोन एज वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि इसमें अपर बॉडी इट रिफ्लेक्ट्स द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द बेसिकली फ्रॉम द अपर बॉडी. So this is more near to the central venous oxygen saturation. So this is known as mixed venous oxygen saturation. So this is the difference. So this is almost equal to central venous oxygen saturation. Okay. So normal. If the sample venous, see, number one. First thing is that central venous oxygen saturation reflects the gap between the oxygen demand and the supply. भाई सप्लाई कम है या ज्यादा है या डिमांड कम है या ज्यादा है, इन दोनों केसेस में इट विल फॉल. इन मोस्ट केसेस दोनों ही होगी, डिमांड ज्यादा होगी ऑक्सीजन की या सप्लाई कम होगी. इन दोनों केसेस में इट इज सपोज टू फॉल. सेंट्रल venous oxygen saturation when you take the sample from the pulmonary artery, for that you have to put a catheter through the right atrium, ventricle and pulmonary artery, and that's technically difficult. So we used mixed venous oxygen saturation when we take the sample from the superior vena cava at the opening of the right atrium. तो वो तो आप पेरिफेरल वेन से जा सकते हो वहां पे. So this is known as mixed and that is known as central. So these are used interchangeably. So both are nearly normal, nearly identical. Now the normal value is considered is 70 to 75%. तो ये हम सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जैसे आर्टीरियल सैचुरेशन है ऐसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन है. तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल हम लेते हैं 70 to 75. तो दिस इज क्लियर. Okay. So less than 70 is considered as inadequate perfusion. इसका मतलब है कि उसको कुछ एलिमेंट है हाइपोवोलेमिया का. Septic shock is the only contradiction where you can get a high mixed or central venous oxygen saturation, because it may have a high supply because of cytokines and inflammatory markers. Because septic shock is different from other kind of shock because it may have a high cardiac output, it may have increased systemic vascular resistance, and they may have a normal capillary filling time, warm and brisk response, and bounding pulsations. Because of the inflammatory mediators.
that is how in hemodynamically septic shock in early stages differ from other kind of shock, and this is important because if this is mistaken, आपने कह दिया कि बच्चा तो ठीक है, इसका बीपी ठीक है, कैपिलरी फिलिंग टाइम ठीक है, but if this phase is not taken care of, he can land into late sepsis and mortality becomes higher. So you must not be misguided by this. आप समझे? जतिन, you get the point? Yes sir. थोड़ा एक बार repeat. You मतलब you should not be misguided by this. Okay. Simple. Because septic shock is a kind of distribution shock. तो distribution shock में क्या है कि as a hypovolemia per se नहीं है, but hypovolemia results from preferential blood supply to vital organs. जैसे brain और heart में आपकी supply ज़्यादा हो जाती है, skin में कम हो जाती है. Okay. लेकिन because of infection, it releases cytokines and inflammatory mediators. This results into vasodilatation. Okay. And this can result into normal capillary time and normal blood pressure and bounding pulsations and maintenance of blood pressure till late. So the importance of this is that during this period you may have a normal or high cardiac output, you may have a normal blood pressure, sometimes even high blood pressure and a normal capillary filling time. So all these signs of hypovolemia are not there. So it should not misguide you to delay your management. So this is how it differs from other kind of, this is how it differs from hypovolemic shock, where you will have low volume pulse and increased capillary filling time and cold and clammy extremity. See, that is where they may have warm hands. So warm hands are and a bounding pulsation, and increased cardiac output can be seen in early septic shock. Okay. Now it is also one of the exception कि venous oxygen saturation may be high because of the same reason. Cytokines. Because of supply is more. And they may not extract the oxygen, so you may have a high venous oxygen saturation in septic shock. Due to this. So all other kinds of shock it will be decreased, but septic shock is the only exception. So otherwise a mixed or central venous oxygen separation is no indicate inadequate perfusion and indication of more fluid or blood or vasoactive therapy, whatever. So, but in case of septic shock, we may have a high. So this is the importance of venous oxygen saturation. So it's a good diagnostic and prognostic indicator. If it is low, suppose आपकी 60 है, 55 है, तो it indicates inadequate perfusion and indication of fluid or vasoactive therapy. Normal may be a good prognostic indicator. 70-75 का मतलब ये है कि perfusion is adequate and it's a good prognostic sign. अब ये प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछते हैं. ठीक है, ये तो सर यहाँ एडिशनल ऑक्सीजन सप्लीमेंट देने का तो जरूरत नहीं है ना सर? किसमें ऑक्सीजन तो हम बढ़ाएंगे. ऑक्सीजन आप तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो वहाँ ऑक्सीजन की नहीं है ना. ऑक्सीजन तो ब्लड पहुंच ही नहीं रहा वहां पे. दैट्स द प्रॉब्लम.